क्लास 8 ज्योग्राफी। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 4 एग्रीकल्चर कराने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं पहले इसमें मेन हेडिंग्स क्या है। तो ये सबसे पहले मेन हेडिंग्स को देख लेते हैं। शिफ्ट इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन एज जूम कल्टीवेशन इन इंडिया। The maize is found in various color across the world. Food security exists when all needs safe and nutrition. Food is meet their dietary needs. Dietary needs है. Coffee was discovered by Kaldi and Arab grade herder. World's 50% population depends on agriculture. फर्स्ट हमारे पास प्राइमरी एक्टिविटीज, द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंडरी एक्टिविटीज, द एक्टिविटीज व्हिच आर कंसर्न with the processing of natural resources. Tertiary activity, the activity which provides support to primary and secondary activities. Agriculture land, the land on which crops are grown, that is called agricultural land. Organic farming, for the production of crops, the use of organic manure and natural pesticides are used. Mixed farming, in mixed farming, the land is used for growing food and fodder crops and rearing livestock. Commercial farming, the crops are grown and animals are reared for sale in the market. Deep farming, this farming is done on a small part of land with normal equipments and much labor. Subsistence farming, this type of farming is parasites to meet the needs of farmers' family. Agriculture, the science and art of cultivation on the soil, raising crops and rearing livestock. Sericulture, commercial rearing of silkworm. Pisciculture, that the breeding of fish in specially constructed tanks and ponds. Viticulture, cultivation of grapes. Horticulture, growing vegetable, flowers and fruits for commercial use. Shifting cultivation, cutting of tree, cleaning the land, doing agriculture and then after completing shifting to other land. Nomadic herding, the herdsman moved from one place to another in search of fodder and water. Commercial farming, the crops are growing and animals are reared for sale in the market. Now, the farm system of an arable farm. ये क्या है देखते हैं। इसमें दिखाया गया है आपको, देखो ये यहाँ पर इनपुट दिया हुआ है, ये प्रोसेस दिया हुआ है और ये आउटपुट है। इनपुट में देखो क्या क्या लग रहा है, मशीनरी है, सीड्स है और केमिकल्स हैं। और प्रोसेस में क्या हो रहा है, प्रोसेस में आपका प्लगिंग है, सोइंग है और स्प्रेइंग है और आउटपुट में जो मिला था वो क्रॉप्स मिली हुई है। तो इस तरह से ये दिखाया हुआ है, यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है। यहाँ पे इस तरह से किसान अपने खेती करते हैं। चलिए सेकंड देखिए क्या है ये है फिजिकल एंड ह्यूमन फार्म इनपुट्स। तो चलिए देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। ये दिखाया गया है आपको, ये फिजिकल इनपुट है। यहाँ पर फिजिकल इनपुट में क्या क्या आता है, सनशाइन आता है, टेम्परेचर आता है, स्लोप आते हैं, सॉयल आती है और रेनफॉल्स आते हैं।
ह्यूमन इनपुट्स, इसमें यहाँ देखिए स्टोरेज है, लेबर है, मशीनरी है और केमिकल्स है। नोमैडिक हर्डर विद देयर कैमल्स, ये हर्डर्स हैं, मतलब एक स्थान से दूसरी जगह लेकर के पहुंचते रहते हैं, इनकी खाने पीने की व्यवस्था करते रहते हैं कैमल्स को लेकर के। इन्हें बहुत भटकना पड़ता है, जहाँ चारा मिल जाता है वहीं पे रुकते हैं। एंड दैट वन इज द शुगर केन प्लांटेशन, ये गन्ने की फसल है, शुगर केन ही, जिसमें आदमी यहाँ देखो देखभाल कर रहा है इसकी। ये जो है आपको बनाना प्लांटेशन या बनाना की खेती की जा रही है, केले की मतलब है खेती है। ये क्या है, राइस कल्टीवेशन है, यानी कि जो धान है उसका है ये, जिससे चावल बनता है। ये है व्हीट हार्वेस्टिंग, व्हीट यानी गेहूं, गेहूं को भी खेती करके काट रहे हैं उसको। ये है बाजरा कल्टीवेशन, बाजरा यहाँ पे उगाया गया है इसको। ये है आपका मेज कल्टीवेशन, यानी भुट्टा जिसको कहते हैं, मक्की, उसकी खेती की जा रही है। और कैसे तोड़ा जा रहा है इसको, कैसे कलेक्ट किया जा रहा है दिखाया गया। यहाँ देखिए क्या है, मेज इज आल्सो नोन एज कॉर्न, वेरियस कलरफुल varieties of maize are found across the world, बहुत तरह के मिलते हैं, कलरफुल मिलते हैं, कई कई तरह के दिखते हैं। तो यहाँ पे कई तरह के दिखा रखे हैं, इसमें थोड़े कलर उभरे नहीं है तो रेड कलर के भी होते हैं। रेड हो गया, कुछ ब्लैकिश हो गया, जो बिल्कुल व्हाइट है, कुछ येलो कलर के हैं, कुछ ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे इसको भून करके भुट्टा दिया गया है खाने के लिए, लेकिन नहीं, ये कलरफुल ही होते हैं, ऐसे ही कलर होते हैं इनके। चलिए ये देखिए, ये कॉटन कल्टीवेशन है, मतलब कपास की खेती है यहाँ पे। और ये है कॉफी प्लांटेशन, कॉफी प्लांट्स को यहाँ लगाया जा रहा है और उसकी प्लांटेशन की गई है। यहाँ देखिए टी प्लांटेशन है, यानी कि चाय की खेती यहाँ पे करी जा रही, प्लांट लगाए जा रहे हैं इसके। फार्मर्स प्लगिंग अप फील्ड, जो फार्मर है, किसान, यानी कि ये खेतों को खोद रहे हैं, हल की सहायता से खोद रहे हैं, प्लगिंग। ये है एन एग्रीकल्चर फील्ड इन इंडिया, ये एग्रीकल्चर फील्ड दिखाई जो इंडिया के अंदर है, जिसमें खेती करते हैं सब लोग। ये बाहर की है, अब फार्म इन द यूएसए, यूएसए की खेती है, ये इस तरह से की जाती है यूएसए में। बाहर में स्प्रे और पैरासाइट्स का स्प्रे जो है प्लेन की सहायता से करते हैं, देखिए यहाँ पे दिखाया गया कैसे स्प्रे कर रहे हैं ये लोग। और ये क्या है, मशीन्ड हार्वेस्टिंग इन यूएसए, यूएसए में इस तरह से हार्वेस्टिंग होती है। चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। व्हाट इज एग्रीकल्चर? आंसर है एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटी एंड इट्स इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, fruits, vegetable, flowers and rearing of livestock. सेकेंड है नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। सो आंसर है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर आर एज फॉलोज। सबसे पहले है फेवरेबल टोपोग्राफी, सेकेंड है हमारे पास सॉइल एंड क्लाइमेट्स, और थर्ड है टेक्निक ऑफ फार्मिंग, किस टेक्निक से किया जा रहा है। क्वेश्चन है व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेज। सो आंसर देखिए, द कल्टीवेशन व्हिच इज डन बाय चेंजिंग द प्लेस इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लीन्ड बाय फेल of tree and burn them. The ash are then mixed with the soil and crops are grown. After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivators move to a new plot. Disadvantage of shifting cultivation: first है soil erosion, second है depletion of forest.
Now, what is plantation agriculture? So answer है first, it is a type of commercial farming. Second, it's required large amount of labor and capital. Third, the produce may be processed on the farm itself or in nearby factories. Fourth, it needs the facility of transport network also. How does the government help for the development of farmers? So answer है for the development of farmers the government help them in following manner. सबसे पहला नंबर फर्स्ट they provide more agriculture land. Second, provide the facility of irrigation. Third, they provide high quality of seeds to farmers. Number four, the use of machinery in farming. Number five, the government help in the increase of crops. Number six, they provide agriculture loan. Take the correct answer. First है Histiculture means क्या है histiculture? That is the growing of fruit and vegetables. Number second, golden fiber refers to. सो दैट इज द जूट. गोल्डन फाइबर के लिए जूट को बोला जाता है. नंबर थर्ड की बात करो, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, ये है आपका ब्राजील. ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी होती है. गिव रीजंस. फर्स्ट है इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी. आंसर इसका है इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी बिकॉज इट is depend on a natural resources. Second, two-third population of India is still dependent on agriculture. Third, most of the part of the land is utilized for farming. Number four है it is regarded as generating business. Different crops are grown in different regions. So answer है to grow different crop, different soil, to topography, climate, human labor is needed. The differences in soil, differences in climate, topology, and the way of living of people, also the region behind it. For example, in Punjab, wheat is grown. In Chhattisgarh, rice is grown. Distinct between the following. फर्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एक्टिविटी एंड टर्सरी एक्टिविटी. चलिए देखते हैं, ये प्राइमरी एक्टिविटीज है और इधर टर्सरी एक्टिविटीज है. पहले प्राइमरी को देख लेते हैं. ऑल दीज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर connected with the extraction and the production of the natural resources are called primary activity. For example, agriculture, fishing, food gathering, etc. Tertiary की बात कर लो. These activities provide support to the primary and secondary sectors through services. For example, transport, trade, banking, insurance. चलिए देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस क्या है. डिफरेंस बिटवीन द सबस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग. दो तरह की फार्मिंग दिखाई है इसमें बताने पहले. ये है सब्सिस्टेंस फार्मिंग को देखते हैं पहले. सब्सिस्टेंस फार्मिंग और यहाँ है इंटेंसिव फार्मिंग. तो सबसे पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग देखना है. इट इज practiced to meet the need of the farmer's family. Low levels of technique and household labor are used to produce on small output. यहाँ क्या है इंटेंसिव में देखो, the farmers cultivates a small plots of land using simple tools and more labor. Favorable climates conditions like large number of days with sunshine and fertile
soil allow growing of more than one crops annual on the same plot. ये एनुअली है ऑन द सेम प्लेट। चलिए आगे देखते हैं टाइप ऑफ सॉइल इन विच द फॉलोइंग क्रॉप्स ग्रो। चलिए फर्स्ट देखिए व्हीट है, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। राइस है, alluvial clay soil which can retain water. Millets, ज्वार, बाजरा, रागी, less fertile and sandy soil. Oil seeds, well drained, fertile soils. Maize, fertile soils. Find out the difference between the lifestyle of farmers in USA and India on the basis of picture collect from magazines, books, newspapers and इंटरनेट। चलिए ये डिफरेंस आपको दिखाया गया है। ये आपका इंडिया का है, मैं दिखाया फिगर यहाँ पे स्टाइल ऑफ द फार्मर इंडिया, और ये इन यूएसए। यूएसए की फिगर देख लो और इंडिया की फिगर देख लो, बहुत डिफरेंस है। इंडिया में सब अपने आप जानवर वगैरह से ही करना चाहते हैं और इधर ये मशीनरी युग में घुसे हुए हैं, इसलिए ये लोग ज्यादा कर जाते हैं। एक आदमी ज्यादा काम कर लेता है और यहाँ एक आदमी बहुत थोड़ा काम कर पाता है। चलिए यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट है द साइज ऑफ द फार्मलैंड आर स्मॉल अबाउट 1.2 हेक्टेयर। यहाँ क्या है द साइज ऑफ farmland in USA are large about 250 to 300 hectare. Second, generally wheat of rice are grown. यहाँ पे क्या है the major crops grown are corn, soybean, wheat, cotton and sugar beet. Farmers use traditional method of farming by using बुलक फुट लगिंग। और यहाँ क्या है फार्मर यूज ट्रैक्टर, सीड ड्रिलिंग, ट्रेवलर, कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेशर टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चर फंक्शन। टू irrigate the field he takes a tubewell on rent. He takes credit from the bank or agriculture's cooperative society to buy HYV seeds and implement. यहाँ पे देखो there is lack of storage facilities, so farmers are forced to sell the produce even when market is not favorable to them. यूएसए की बात कर लो फार्मर सेंड टू द सोयल सिंपल टू द सोयल टेस्टिंग लेबोरेटरी टू चेक वेदर सोयल nutrients are sufficient for the particular crops or not. Or chemical fertilizers or pesticides are used whenever required. Or grains are stored in automated grain storage. Which is the oldest human business? So answer है the oldest human business is agriculture. Which is the important business of the people in developing countries? So answer है the important business of the people of developing countries is doing agriculture. Next question है what is arable land? So answer है the land on which the crops are grown is called arable land. ये अरेबल लैंड है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट की तरफ क्वेश्चन में। ये है नेम द ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। सो आंसर है द मेन ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर आर प्लगिंग, सोइंग, irrigation, weeding and harvesting. Name the crops cultivated in intensive subsistence agriculture. So answer है the crops that are cultivated in intensive subsistence agriculture are wheat, maize, pulses and oil seeds.
What is mixed farming? So answer है when the agriculture and animals husbandry work is done together, it is called mixed farming. In which parts of the world the plantation agriculture is more? So answer है in the tropical region of the world the plantation agriculture is done. In which tea, banana, sugarcane are the important crops. What do you mean by coarse crop or milters? Answer है ज्वार, बाजरा, रागी etc. are the called coarse crop or millets. Answer है क्वेश्चन है which is the birthplace of jute plant? So answer है the birthplace of jute plant is Indian Ocean में है ये. Which is the world's biggest milk products producer country? So answer है world biggest milk producer country is India. सबसे ज्यादा इंडिया में ही मिल्क होता है बच्चों. What is subsisting? What is subsistence farming? So answer है यहाँ the farming in which produce is used to meet the needs of the farmer's family is called subsistence farming. In this table are the main crops. These are not exported. What do you mean by commercial farming? So answer है the farming which is parasites parasitized for purpose of doing business is called commercial farming. In this farming, the case crops are grown. The use of machinery, parasites, and irrigation is properly done. In this type of farming, commercial grain farmings are plantation farming are done. Why India is regarded as unique nation in the opinion of agriculture? So answer है India is a unique nation in the opinion of agriculture because first है in India great part of plain land is farmed. Second है the soil of country is capable to grow different type of crops. Third है the suitation of doing any type of crops is preferable. Fourth है open sunshine other conditions are available for farming. Fifth है the agriculture has important place for India's export business. Animal husbandry is profitable how? So answer है animal husbandry is profitable for the people of poor classes through which they can get more profit. First in drought areas, mountainous region and tribal areas, the people prefer animal husbandry as their livelihood. Second है the areas where agriculture is less in that place that this is a method for filling their livelihood. Third है milk, wool, skin, horn, bones and meat etc. are got from animals only. Write the main features of the nomadic herding. So answer है the main features of nomadic herding are as follows. Number one है herd husband moves from one place to place with their animals in search of fodder and water. Second, herders have to move from one place to another due to climate constraints. Sheep, camel, cattle, yak, and goats are commonly reared.
फोर्थ है by animals rearing they got different products of their family. What are the characteristics of commercial farming? So answer है the main characteristics of commercial farming are number one है crops are grown for commercial purpose. Second है this type of farming is parasited in temperature grassland. Third है these areas are sparsely populated with large farmers spreading over hundreds of hectares. Number four, only single crop in large amount is grown. Describe the geographical condition required for any kind of beverage. So answer है the main kinds of beverage are tea, coffee and cocoa. For cultivation of tea, the following geographical conditions are required. First, a climate. For this, the temperature should be 250 degrees C and the rainfall must be between 200 to 250 centimeter. It is not 250 degrees C, I think it is the 25 degrees C. ये 25 degrees C होना चाहिए. The rain showers are needed to the whole year. Second है soil, it needs well drained loamy soil and gentle slope. The proper and good human labors are required for collection of tea leaves. Discuss the geographical conditions required for rice farming. So answer है first rice is main crop of monsoon. Second है the geographical conditions required for rice are as follows. Climate, it needs high temperature and high humidity. Rainfall, more than 100 centimeter of rainfalls is required. The need of water is fulfilled through irrigations also. Soil, it needs drained loamy soil. In mountainous area, the rice is grown by doing terrace farming. Write the feature of the plantation farming. So answer है the feature of plantation farming are as follows. First है in this farming banana, tea, coffee, sugarcane, rubber tree, etc. are planted. Second है modern equipments and tech machinery is needed. Third है large amount of labor and capitals is required. Fourth है the production of crops is dependent on the size of farmers. Fifth है the development of and a transport network is essential for such farming. इसी के साथ ये लेसन समाप्त हो रहा है बच्चों. नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसे जरूर दबा के सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें. कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके. मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स. इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं. मिलता हूं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.